our friends sometimes are actually reflective of our lifestyle. Sometimes किसी की लाइफ में होता है ऐसा कि आप आपकी ह्यूमन एजेंसी is tied to, obviously आप अगर आपका एक लाइफस्टाइल है, फॉर एग्जांपल एक इंसान जो 5 वक्त मस्जिद जाता होगा, उसके हो सकता है लोग भी उसको वैसे ही मिलते होंगे। बिल्कुल। आप एंड वन मोर थिंग, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि अल्लाह ताला सेंड्स यू पीपल genuinely. Allah Ta'ala sends people your way. You cannot imagine कि इंसान का जो रिस्क होता है ना, रिस्क हम समझते हैं सिर्फ खाने से। अनफॉर्चुनेटली रिस्क आपका सिर्फ खाना नहीं है, आपकी सराउंडिंग्स, रिस्क आपका इल्म है, रिस्क आपका सस्टेनेंस है, रिस्क आपका खाना है, रिस्क आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं। बिल्कुल। इट्स एवरीथिंग। सो अल्लाह ताला इंक्रीजेस दैट। आई एम टेलिंग यू, फॉर मी it changes slowly. Things will change for anyone watching right now. I don't know what your struggles are. It could be maybe as simple as आप शायद नमाज ना पढ़ रहे हो, या आपको झूठ बोलने की आदत हो, या कुछ भी, कोई भी आपका सर्कमस्टांसेस है इस टाइम पे। just start somewhere और चीजें बदलती जाएंगी। आपका इल्म इवॉल्व हुआ, क्योंकि हर चीज आपकी लाइफ में इवॉल्व होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती है, आपका एक्सपीरियंस इवॉल्व होता है, और जो आप कर रहे हैं इट हैज टू रिफ्लेक्ट, इट कैन नॉट बी आप पढ़ रहे हैं बट आप उसको यू नॉट इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन योर लाइफ। यू हैव टू डू दैट एंड थिंग्स चेंज। अल्लाह ताला puts barakat, he puts so much barakah in your work, in your life. And I'm not just saying for myself. I can't even say how useless I am. But so many people around me who inspire me, I've seen them how they change and how much barakah Allah Ta'ala puts in their life. Your friends, and not just religiously. I'm not just saying religiously. आप देखेंगे कि आपका कोई एक friend, imagine you 10 years ago. Maybe you had a different set of friends. कुछ उसमें से रह गए होंगे, कुछ चेंज हो गए होंगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी बदल गई है। और लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कीप मूविंग, बिकॉज द मोमेंट यू गेट स्टक समवेयर, you confine yourself to a certain identity. हमें एक बहुत गंदी आदत होती है, एक सेल्फ लिमिटिंग स्टेट, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से होगा। Everything changes. You never know. You have to be prepared for everything. And one more thing which is important, if you have friends who you feel are not where they should be, try to talk to them. How else would they know? जैसे मैं आपको ये सूरत असर बता रही थी कि कहते हैं कि सहाबा जब एक दूसरे को मिलते थे, या एक दूसरे से when they would, for example, they met each other सड़क पे, when they would part ways, they would recite Surat al-Asr to one another to remind, so it's important कि, और एक और बहुत important चीज ये है अपनी mental health के लिए, choose good friends. Rectify your soul. When you try to rectify and you try to take charge of your life, maybe I am the toxic one. जरूरी नहीं मेरे friends toxic हो. Maybe I am the toxic one. Yeah. Maybe I need to change that about myself. Yeah. So you have to identify maybe there's something wrong that you're doing. So understand that, identify it, and try to change it. Don't allow people in your life who don't add benefit to your life. And I don't mean materialistically, I mean to your knowledge, I mean to your character. If you have friends, क्योंकि we often, our human agency is limited with people जो हम कुछ कर रहे हैं. For example, I start a venture or I have an idea and I only seek validation from these friends. वो तो हमेशा बोलेंगे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है. And similarly, if I ask the world is always going to criticize you. So you have to find the middle path. You have to know who really is your friend and how do you identify a friend. What are the standards you've set for a friend? So we have to set standards for ourselves. I remember this one verse where Allah Ta'ala says, Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum.
कि ए ईमान वालों तुम पर है अपनी नफ्स. So it is, what I mean by it, what it means is that you have to take care of your soul. Yeah. You have to take care of your well-being, your nafs. And what does that mean? That means that you have to strive to rectify it all the time. You have to seek resources, build within yourself what benefits you and what is going to benefit you in the hereafter. And what is important by this verse is not to mean कि दुनिया भाड़ में जाए मुझ पे तो I just have to take care of myself. No, 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 no. It is a part of iman to want good for others. But how will you want good for हमारा स्टैंडर्ड ऑफ गुड और बैड कैसे होता है? अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं अपनी आसपास के लोगों के लिए भी वही चाहूंगा. बट अगर आपको कोई इतनी घटिया चीज पसंद है आप आसपास के लिए भी तो वही चाहेंगे ना. It is only when you increase your standards, when you rectify yourself, when you focus on yourself, this is when you will want good for everybody. When you start taking care of yourself, when you start investing in yourself, आपके आसपास की चीजें भी चेंज होती हैं, आपके आसपास के लोग भी चेंज होते हैं. And you have to respect that. You have to respect yourself. You have to understand कि what doesn't benefit you, and that comes from self awareness. That only comes from self awareness. When you're aware of yourself, and I also mean not to just be aware of how amazing you are, because we are not amazing. When you realize कि आपको किसके लिए काम करना है, आपको अपना हर अमल ऐसे लगेगा. But it is also to be aware of your shortcomings. जब आपको पता होगा कि आपको कितना लंबा जर्नी अभी लेना है, आप में कितनी कमियां हैं, and when you are focused on your own shortcomings, you will not have time to gossip, and you will not have time to focus on other people, because you realize you're equally guilty of that fault that you're Yeah. accusing other people of.